बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हैदर अली डोगर। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है जी एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस कौन सी हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं जी एप्लीकेशंस ऑफ लिमिट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। There are many applications of integration in various fields of mathematics, physics, engineering and other sciences। इसमें से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जी हम इंटीग्रेशन में कैसे यूज हो रही होती है। पहले हम कैलकुलस में बात करें तो इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अगर हम बात करें तो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 में हम फाइंड भी करते हैं 3.7 के अंदर के एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना, तो उसमें हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व विच इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ मोशन, फोर्स एंड एनर्जी। इनमें इसको हम यूज करते हैं। इन फिजिक्स इंटीग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट वेरियस क्वांटिटीज सच एज वर्क, energy and force. For example, the work done by a constant force acting on an object can be calculated using integration physics में इसका यूज है। इंजीनियरिंग में देखें तो इंजीनियरिंग में हम कहते हैं जी इंटीग्रेशन इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रेट ऑफ चेंज सच एज द फ्लो ऑफ रेट ऑफ अ फ्लूइड और द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। इकोनॉमिक्स में इंटीग्रेशन इज यूज टू एनालाइज सप्लाई एंड डिमांड एंड द स्टडी ऑफ टू मार्केट एक्विलिब्रियम। ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, तमाम जो हम स्टडी कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द इंटीग्रेशन ऑफ डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज सच एज इन डाटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग। इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन के यूज होते हैं। बायोलॉजी में इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल सिस्टम्स सच एज द इंटीग्रेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में ये कैसे यूज हो रही है जी। इंटीग्रेशन इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स एंड हैज मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ। सम एग्जांपल्स ऑफ द यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन डेली लाइफ इंक्लूड। इसमें हम अब डेली लाइफ के एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। इंजीनियरिंग में हम यूज कर रहे थे, इंजीनियर्स यूज इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम सच एज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीम और द फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड थ्रू अ पाइप। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स यूज्ड इंटीग्रेशन टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द मार्केट। इन्वायरमेंटल साइंसेज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास है जी इन्वायरमेंटल साइंसेज में इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट यूज इंटीग्रेशन टू मॉडल द मूवमेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द इन्वायरमेंटल एंड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचुरल सिस्टम। नेविगेशन की बात करें तो नेविगेशन सिस्टम सच एज जीपीएस यूज इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। डाटा एनालिसिस, इसमें हमारे पास डाटा एनालिसिस यूज इंटीग्रेशन टू एनालाइज डाटा सेट्स एंड टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ओवरऑल इंटीग्रेशन इज अ पावरफुल टूल दैट इज यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड ऑफ मॉडल एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बेस्ड ऑन डाटा एंड एनालिसिस। ये हमारे पास इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन थी और इसका डेली लाइफ में यूज था। इसके डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स थी। ओके, अल्लाह हाफिज।